dear students, once again welcome back to the channel School of Thought with Sir Mubashir Javed। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आज का जो टॉपिक है वो बहुत मजेदार है। आप उसको पढ़ने के लिए बड़े बेताब बैठे होंगे। टॉपिक इज अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। देखिए, बेताबी का लफ्ज मैंने इसलिए यूज किया, ये ब्लड है ना, अगर ये ब्लड ना हो तो इंसान की जो ताब, जो बेताबी है ना, वट एवर जो भी है, वो खत्म हो जाती है। ब्लड होगा बॉडी के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट करेंगे, ऑक्सीजन सर्कुलेट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट करेगी, वेस्ट मटेरियल सर्कुलेट करेगा, वापस आएगा, वट एवर ब्लड जाएगा, ब्लड आएगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो इंसान की जो आपोताब है ना, वो सारी इस ब्लड के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये होगा तो इंसान उछलता कूदता रहेगा, उठता बैठता रहेगा, काम करता रहेगा। ब्लड नहीं तो कुछ भी नहीं, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, टॉपिक इज अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड बेसिकली हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड टाइप का स्पेशल हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है जी, दैट इज कंपोज्ड ऑफ दो चीजों के ऊपर ये बेसिकली कंपोज्ड है हमारे पास। वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ब्लड प्लाज्मा, मैं यहाँ लिखता हूँ ब्लड प्लाज्मा, एंड सेकंड थिंग इज कॉल्ड एज ब्लड सेल्स। ये दो हमारे पास कंपोनेंट्स है ब्लड के। ब्लड प्लाज्मा इज बेसिकली द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. It constitutes 55% of the blood. And blood cells are the cells basically which are like RBC, WBC and platelets. ये तीन तरह के हमारे पास cells हैं which constitutes remaining 45% of the blood. Now for blood plasma, out of this 55%, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 90% is water and 10% remaining substances. अब रिमेनिंग सब्सटेंसेस कौन कौन सी हैं, उन सबको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लड प्लाज्मा को ही इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। 90% तो पानी सेपरेट हो गया, रिमेनिंग 10%। अब इसमें क्या कुछ है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, देन हमारे पास सम सॉर्ट ऑफ आयंस हैं, देन हमारे पास इसके अंदर मेटाबोलाइट्स हैं, हमारे पास इसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, देन हमारे पास इसके अंदर हार्मोन्स हैं, और फाइनली हमारे पास इसके अंदर डिसॉल्व गैसेस हैं। दीज आर द बेसिकली 5 कंपोनेंट्स ऑफ रिमेनिंग 10% ऑफ ब्लड प्लाज्मा। द वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स। दीज आर अबाउट 7 to 9%। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके अंदर फिब्रिनोजेन है, इम्यूनोग्लोबिन है, हमारे पास इसके अंदर एल्बुमिन है। ठीक है, ये हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि 7 से 9% आउट ऑफ 10% बनाती हैं इसका। फिर हमारे पास कुछ आयंस हैं, लाइक हमारे पास क्लोराइड्स हैं, हमारे पास बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है, जो कि इसका पार्ट है। देन हमारे पास मेटाबोलाइट्स, लाइक हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे पास वाइटामिन हैं, ठीक है। देन हमारे पास वेस्ट की बात कीजिए तो हमारे पास यूरिक एसिड है, हमारे पास यूरिया है, ठीक है। दीज आर लाइक वेस्ट मटेरियल्स। हार्मोन्स आर लाइक केमिकल्स जो इसके अंदर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, हमारे पास बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज में हेल्प कर रहे होते हैं। डिसॉल्व्ड गैसेस आर लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स आर पार्ट्स ऑफ रिमेनिंग 10% ऑफ ब्लड प्लाज्मा। Then we have blood cells which are RBCs, WBC and platelets. Number 1 is हमारे पास RBC which are red blood cells. One by one सबको हम क्या करते हैं जी, डिस्कस करते हैं। Red blood cell in short they are called as RBC, which stands for red blood cells. They are also called as erythrocytes. This is the basically scientific name of red blood cell, depends upon their red color, that's why called as erythrocytes. They are non-nucleated cell. They are biconcave in shape. Lifespan is 120 days. Formed in bone marrow and destroyed or worn out in liver and spleen. These are the few points about red blood cells. They are called as erythrocytes. These are non-nucleated, biconcave in shape, 120 days their lifespan.
बोन मैरो में बनेंगे और लिवर या स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय या वर्न आउट हो जाएंगे. This is about red blood cells. Now, second type of blood cell is called as white blood cells. White blood cells, in short, they are called as WBC. They are also called as leukocytes. The second name or scientific name of WBC is leukocytes. तो मैंने पहले कहा था कि red blood cells are also called as erythrocytes as because of their red color, and that is one point मुझसे miss हो गया. That is because of the presence of hemoglobin. Hemoglobin is a protein जो क्या करती है हमारे पास red cells को red color provide करती है. ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है. But now WBCs are not white in color. They are actually transparent in color. They are not white in color, transparent in color. In order to separate them from RBC, we use the word WBC. That's why we can say that WBC are white blood cells. Their lifespan is 3 to 4 days. These are nucleated cells. There are two types of WBC. The very first one is called as granulocytes. Granulocytes. And second one is called as agranulocytes. Because of the presence of granules, they are called as granulocytes, or the absence of granules, they are called as agranulocytes. Now discussing granulocytes. There are three types of granulocytes. The very first one is called as neutrophils or neutrophiles. Second one is called as basophiles. And third one is called as eosinophiles. These are the three types of granulocytes. Neutrophils are basically involved in the process of engulfing of the pathogens called as phagocytosis. They engulf the pathogen. Pathogen means foreign particle. जब अटैक करेगा उसे engulf करेंगे और the process of phagocytosis करेंगे. Basophils control allergic reactions. And eosinophils also help in allergic reactions. They release protein that is called as basically histamine को release करते हैं. क्या करेंगे जी? Release histamine. तो ये help करेंगे control of allergic reactions के अंदर. Now second type is called as agranulocytes. Because of the absence of granules, they are called as agranulocytes. They are divided into monocytes and second one called as lymphocytes. मोनोसाइट्स बेसिकली क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया वगैरह को इंजेस्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, जो फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको इंजेस्ट करने की कोशिश करेंगे. एंड lymphocytes are basically of two main categories called as B lymphocytes and then T lymphocytes. B lymphocytes जो है हमारे पास, they will produce antibodies. एंटीबॉडीज क्या करती हैं? एक्ट अगेंस्ट एंटीजेन्स. एंटीजन इज द फॉरेन पार्टिकल दैट इज गोइंग टू कॉज अ डिजीज इन योर बॉडी. उसको ये खत्म करने की कोशिश करेंगे. कॉल्ड एज एंटीबॉडीज. कौन प्रोड्यूस करेगा? बी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट बेसिकली दो तरह के होते हैं, टी हेल्पर सेल्स एंड टी किलर सेल. टी हेल्पर असिस्ट करते हैं टी किलर को, जो डायरेक्टली किल करते हैं किसी पार्टिकल को विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. ठीक है, दिस इज अबाउट व्हाइट ब्लड सेल्स. Now, third and last type of blood cells is called as platelets. These are also called as thrombocytes. ठीक है. And इनके जो cells होते हैं, those are called as megakaryocytes. Cells of like bone marrow called as mega for bigger and karyo for nucleus containing cells. ठीक है. They have a proteins called as fibrinogen that help in the process of blood clotting. जहां पर ब्लड इंजरी होगी, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, मैं यूं लिखता हूँ कुछ, इंजरी से होगी ब्लीडिंग, तो उस ब्लीडिंग को हमें क्लॉट करने की जरूरत पड़ेगी. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज फिब्रिनोजन. दैट इज द फंक्शनलिटी ऑफ प्लेटलेट्स टू क्लॉट द ब्लड, ताकि ब्लड लॉस से बचाया जा सके. दिस इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इन टर्म्स ऑफ प्लाज्मा, इन टर्म्स ऑफ ब्लड सेल्स. इस टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई चीज मुश्किल लगी हो, यू कैन आस्क इन कमेंट्स, आपको उसका जवाब मिल जाएगा. वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह.